डिटेल से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि ग्लोबली हर 4 फेटल वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स में से एक इंडिया में होता है? हाँ, और दूसरी तरफ अगर हम टेक की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैसे डिसेप्टिव डार्क पैटर्न्स यूज करके हमारे डेली डिसीजंस मैनिपुलेट करते हैं, ये भी एक ह्यूज रियलिटी है। एग्जैक्टली आज हम इन्हीं माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को अनपैक करेंगे इस डीप डाइव में। हम इकोनॉमी, लेबर रिफॉर्म्स और जीएसटी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम सिंपल बनाएंगे। एब्सोल्युटली। आज के इस लर्निंग मैप में हम कवर करेंगे टोटल 32 क्रिटिकल एरियाज, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट स्कीम्स एंड डार्क पैटर्न्स, मूविंग थ्रू लेबर कोड्स और एंड करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स और सेबी रूल्स पर। एकदम स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ चलेंगे, समझे? तो लेट अस डाइव राइट इन। टॉपिक नेम इज इम्प्लीमेंटेशन, कोलैबोरेटिव अप्रोच। Broad micro theme is trade and MSME support. And the heading is Credit Guarantee Scheme for Exporters, or CGSE. So what is the short definition here? Basically, it is a financial safety net to boost exports by providing a 100% credit guarantee. For a real-life example, imagine a small handicraft MSME needing a loan to ship goods abroad but lacking collateral. CGSE acts as their guarantor. That is a lifesaver. Introduction में देखें तो export boost करने के लिए गवर्नमेंट ने नया प्लान बनाया है। The background is that the Ministry of Commerce, MSME और Finance collaborate कर रहे हैं for digital assistance. Right. The core logic involves a 20,000 crore rupees coverage. It gives a 100% guarantee on additional working capital. The loan limit is up to 20% of the existing limit, maximum 50 crore rupees. Interest is capped at 10% for banks and 14% for NBFCs, with zero processing fees. And the validity is from November 19, 2025 to March 31st, 2026. Eligibility requires MSMEs to have at least 5% export turnover और non-MSMEs के लिए 20%. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इट इंश्योर्स लिक्विडिटी विदाउट प्रीपेमेंट पेनल्टीज, क्रूशियल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स लिमिट्स। Exactly. Conclusion ये निकलता है कि exporting becomes risk-free for eligible borrowers. Let us do the rapid cross-questioning. What is the total guarantee coverage amount? इट इज 20,000 करोड़ रुपीस दोस्त। मैक्सिमम लोन अमाउंट पर बोरोवर कितना है? Exactly, 50 crore rupees. इंटरेस्ट रेट कैप क्या है? 10% for banks and 14% for NBFCs. Any processing fee involved? नहीं, zero fees and no prepayment penalties. Eligibility criteria for MSMEs. Minimum 5% export turnover होना चाहिए. Now pause and practice saying the CGSCOSE provides 100% guarantee up to 50 crore rupees. In short, this scheme removes loan risks for exporters to boost global trade. समझे? Awesome. Moving on, topic name is E-commerce country of origin. Broad micro theme is digital transparency. Heading is mandatory country of origin filters. What is the short definition for this one? Online shoppers must easily see where an imported product comes from. For example, imagine buying a smartphone online and easily filtering out or selecting products made in specific countries. That makes shopping so much transparent. As an introduction, the Union Department of Consumer Affairs ने draft rules propose किए हैं. The background is simply to enhance transparency in online shopping. Yes, the core logic is the Draft Legal Metrology Second Amendment Rules 2025, which adds Sub-Rule 10 to Rule 6. It mandates searchable and sortable filters by country of origin for imported products on e-commerce platforms. So the real world impact is direct consumer empowerment. The conclusion is that customers exact origin देखकर choice make कर सकते हैं. Time for cross questions. कौन सा डिपार्टमेंट ये ड्राफ्ट लाया? यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लाया। किस रूल में अमेंडमेंट हो रहा है? रूल 6 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2025। मेन फीचर क्या है इन फिल्टर्स का? दे मस्ट बी सर्चेबल एंड सॉर्टेबल। ये किस टाइप के प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है? इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑनलाइन। अल्टीमेट गोल क्या है? कंज्यूमर एम्पावरमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग सर्चेबल कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर्स एनहांस ट्रांसपेरेंसी। इन शॉर्ट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मस्ट लेट यू फिल्टर इंपोर्टेड आइटम्स बाय देयर ओरिजिन कंट्री। Very clear. Next, topic name is dark patterns. Broad micro theme is consumer protection in tech. Heading is eliminating deceptive UI tricks. Define it for us. These are design tricks used by websites to manipulate user behavior. Real life example, a website adding travel insurance to your cart without asking. This specific trick is called basket sneaking. Wow, that happens so often. Introduction-wise, the government directed e-commerce platforms to audit and eliminate dark patterns. Background is that proactive audits zaruri hain without waiting for CCPA intervention. Exactly. The core logic dates back to the term coined by Harry Brignall in 2010. In 2023, the CCPA specified 13 dark patterns: forced urgency, basket sneaking, confirm shaming, forced action, nagging, subscription traps, bait and switch, and so on. The real-world impact is that it protects users from digital manipulation. Conclusion is simple. Digital platforms have to respect user intent, period. Ready for questions? Dark patterns term किसने coin किया? हैरी ब्रिग्नल ने 2010 में। CCPA ने कितने डार्क पैटर्न स्पेसिफाई किए हैं? टोटल 13 डार्क पैटर्न्स। बास्केट स्नीकिंग क्या होता है? Adding products to cart without consent. दोस्त, गिल्ट ट्रिपिंग यूजर्स को क्या कहते हैं?
उसको कंफर्म शेमिंग कहते हैं। बेट एंड स्विच का मतलब क्या है? Advertises one product, delivers another inferior one. Now, pause and practice saying CCPA regulates 13 types of deceptive dark patterns. In short, websites cannot use sneaky designs to force you into buying things. Brilliant. Now, shifting gears to macroeconomics. Topic name is Dutch disease. Broad microtheme is macroeconomics and manufacturing. Heading is the cost of sudden windfalls. Short definition? An economic windfall causes negative effects on manufacturing sectors. Imagine a town finding gold. Everyone mines gold. Salaries rise, but regular farming collapses because it is no longer competitive. Matlab, unexpected wealth can be risky. For the introduction, high government salaries drawing workers away from manufacturing creates a similar effect. Background is that the term was coined after the 1959 Groningen gas fields in the Netherlands. Right. Core logic is that higher incomes increase demand, so domestic prices rise. This boosts imports and reduces demand for domestic manufacturers. Plus, the theory of induced innovation says labor scarcity drives capital-biased growth. Real-world impact means massive deindustrialization risks. Interestingly, John Habakkuk noted that 19th century Britain grew faster than the US due to land and labor scarcity. Conclusion: a sudden boom in one sector can accidentally harm manufacturing. Let us do the questions. Dutch disease term kahan se aaya? 1959, Groningen gas fields in the Netherlands. What happens to domestic prices? Higher incomes cause domestic prices to rise. Imports पे क्या असर होता है? फ्री ट्रेड के अंदर इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं. थियरी ऑफ इंड्यूस इनोवेशन क्या कहती है? Labor scarcity drives technological growth. John Habakkuk का observation क्या था? 19th century Britain grew faster due to relative scarcity of land and labor. Now, pause and practice saying Dutch disease shows how an economic windfall can hurt domestic manufacturing. In short, sudden wealth in one sector makes other exports uncompetitive. Cool. Now, let us jump to the next. Topic name is E-Jagriti. Broad microtheme is digital consumer grievance. Heading is Unified Consumer Dispute Platform. What is it? One portal merging multiple consumer grievance systems. Like a single window for all your customer rights complaints, instead of visiting multiple offices. I love that. Introduction is that this integrated digital platform is developed by the Department of Consumer Affairs and NIC. Background is to simplify access for consumers, judges, advocates, industry experts, and mediators. The core logic is that it merges eDakhil, Confinet, and OCMS into one. It was launched on National Consumer Day 2024, which is the 24th of December. Real-world impact is that it streamlines the legal process for consumer disputes. Conclusion: Digital India pushing for faster justice. Cross questions time. कौन से 3 systems merge हुए हैं? eDakhil, Confinet और OCMS. ये प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया? Department of Consumer Affairs और NIC ने. Launch date क्या थी? National Consumer Day 24th of December 2024. इसके साथ और कौन से apps launch हुए? जागो ग्राहक जागो ऐप और जागृति ऐप. इसका main beneficiary कौन है? Consumers, judges और mediators सभी. Now pause and practice saying E-Jagriti merges eDakhil, Confinet and OCMS. In short, eJagriti is your one-stop digital portal for all consumer complaints. Perfect. Topic name is CCPA or Central Consumer Protection Authority. Broad microtheme is regulatory bodies. Heading is the Guardian of Consumer Rights. What is the short definition? It is the top authority formed to stop unfair trade practices and false ads. For example, if a brand claims their energy drink makes you fly, CCPA investigates and fines them. Introduction tells us it is constituted under Section 10(1) of the Consumer Protection Act 2019. The background is that it came into force in 2020, replacing the old 1986 Act. Core logic is very strong. It can act suo motu, on complaint, or by government direction. It is headed by a chief commissioner. The investigation wing is headed by the Director General, and district collectors can investigate locally. Real-world impact is a direct mechanism to tackle misleading advertisements. Conclusion is that we now have a stronger institutional framework for consumer rights. Let us test our memory. CCPA किस एक्ट के अंडर बना? Consumer Protection Act 2019. किस सेक्शन के अंडर? Section 10(1). याद रखना. क्या CCPA खुद से एक्शन ले सकता है? Yes, suo motu action allowed है. Investigation wing कौन हेड करता है? डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं. लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेट कौन कर सकता है? District collectors are empowered. Now, pause and practice saying CCPA was formed under the Consumer Protection Act of 2019. In short, CCPA is the apex body hunting down false ads and unfair practices. Moving to tech manufacturing. Topic name is SEZ Norms Electronics. Broad microtheme is manufacturing and supply chain. Heading is Relaxed Rules for Semiconductors. Definition, please. SE's rules are eased, so electronic units can sell inside India too. Real life example. A chip factory in an SEZ and now sell chips to an Indian car maker, not just export them.
Introduction highlights that the Union government notified changes to SEZ rules for semiconductors and electronics. Background is to reduce import dependence in strategic areas and boost local supply chains, especially since India hosts the third largest startup ecosystem. The core logic has specific amendments. Rule 5 is amended to reduce minimum land from 50 to 10 hectares. Rule 7 allows the board to relax encumbrance-free norms. Rule 18 allows SEZ units to supply to the rest of India after paying duties. Micron in Sanand and Aquas in Dharwad are already approved. Real-world impact is that it helps build the India semiconductor mission. Remember, China had a 35% global share in 2021. Conclusion is simple: self-reliance in critical tech components. Ready for questions. Minimum land area कितना reduce हुआ under Rule 5? 50 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर्स। कौन सा रूल डोमेस्टिक सप्लाई अलाउ करता है? Rule 18 अमेंडमेंट के बाद चाइना का ग्लोबल सेमीकंडक्टर शेयर 2021 में कितना था? 35% दोस्त। माइक्रोन सेमीकंडक्टर कहाँ सेटअप हो रहा है? सानंद गुजरात में। SEZ यूनिट कहाँ अप्रूव्ड है? धारवाड़ कर्नाटक। Now pause and practice saying Rule 18 allows SEZs to supply semiconductors to the domestic market. In short, easing SEZ land and sales norms to make India a chip manufacturing hub. ओके यहाँ तक मजा आया ना दोस्त? अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आ रहा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक बटन हिट करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें फॉर एक्सक्लूसिव नोट्स। योर सपोर्ट कीप्स अस गोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Exactly, let us jump right back in. Topic name is Quality Control Orders. Broad micro theme is international competitiveness. Heading is Mandating Quality Standards or QCOs. What is the definition? Rules ensuring all products meet Bureau of Indian Standards, that is BIS marks. Example, ensuring every toy sold in India is safe and non-toxic. Introduction shows the government using QCOs to push industry towards international competitiveness. Background is that subsidies have not boosted exports much, so the focus is now on land and regulatory ease. Core logic is that QCOs mandate minimum quality standards set by BIS. Imports for export production under schemes like EOUs, SEZs, or advance authorizations are exempted. Also, there are discussions on rare earth battery subsidy due to China's export ban. Real-world impact is that it eliminates low-quality dumping from other countries. Conclusion: quality, not just price, is the new export strategy. Let us do the Q&A. QCOs कौन सी बॉडी के स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। क्या एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के इंपोर्ट्स पे QCO अप्लाई होता है? नहीं, उनको एग्जेम्पशंस मिलती हैं। गवर्नमेंट किस बैटरी टाइप के लिए सब्सिडी डिस्कस कर रही है? रेयर अर्थ बैटरीज के लिए। किसके एक्सपोर्ट बैन की वजह से ये जरूरी हुआ? चाइना के एक्सपोर्ट बैन के बाद गवर्नमेंट का नया फोकस सब्सिडीज से हटकर किस पर है? लैंड एक्विजिशन और ईजिंग रेगुलेटरी हर्डल्स पे। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस साइन QCOs enforce BIS standards to boost global competitiveness. In short, strict quality checks to make Indian goods world-class. With specific exemptions, let us shift to labor laws. Topic name is Factories Gujarat Amendment Ordinance. Broad micro theme is labor law reforms. Heading is Extending Work Hours and Night Shifts. Definition. Gujarat amended the 1948 Act to allow 12-hour shifts and women in night shifts. Real-life example: a woman can now legally choose to work the night shift in a textile mill if the factory provides transport and security. Introduction is that Gujarat amended the Factories Act of 1948. Background is enhancing industrial flexibility. Core logic is that maximum daily hours increased from 9 to 12, weekly limit is retained at 48 hours. It requires workers' written consent. Overtime is paid at double rate. Safety measures for women include lighting, CCTV, female security, safe transport, minimum 10 women per shift, and absolutely no forced night shifts. Real-world impact is that it boosts production capabilities while legally mandating safety. Conclusion is that flexibility is balanced with worker consent and safety. Cross questions. Daily working hours कितने increase किए गए हैं? 9 से बढ़ाकर 12 आवर्स कर दिए। Weekly working hours की लिमिट क्या है? वो 48 आवर्स ही रिटेन्ड है। ओवरटाइम वेज का क्या रूल है? डबल द ऑर्डिनरी रेट मिलेगा। नाइट शिफ्ट में मिनिमम कितनी वुमेन होनी चाहिए? मिनिमम 10 वुमेन शेड्यूल्ड होनी चाहिए। क्या नाइट शिफ्ट फोर्स की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, रिटन कंसेंट जरूरी है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द गुजरात ऑर्डिनेंस अलाउज 12-hour shifts but keeps the 48-hour weekly limit. In short, longer daily shifts but with strict safety and consent rules for female workers. Next up, topic name is employment-linked incentive. A broad micro theme is job creation schemes. Heading is the ELI scheme framework. What is it? Financial rewards for companies hiring new employees and bonuses for first-time workers. Example, a factory hires a fresh graduate. The grad gets a joining bonus and the factory gets a monthly subsidy. Introduction tells us the ELI scheme is to support employment generation. It is part of the PM's package for employment and skilling with an outlay of 2 lakh crore rupees. Background is that it aims to create more than 3.5 crore jobs over 2 years from August 1, 2025 to July 31, 2027. The core logic applies for salaries up to 1 lakh rupees. A first-time employee gets 1 month wage up to 15,000 rupees in 2 installments via DBT at 6 and 12 months. Employer incentives are up to 3,000 rupees per month for 2 years. EPFI implements it.
Slabs are under 10K gets 1,000 incentive, 10K to 20K gets 2,000, and over 20K gets 3,000. Condition is to hire at least 2 workers if workforce is under 50 or 5 if over 50 for 6 months. Real-world impact is a direct push for formal job creation. Conclusion is that it is a win-win for freshers and employers. Let us fire away the questions. First-time employee को कितना maximum incentive मिलेगा? Up to 15,000 rupees in 2 installments. ELI scheme का job creation target कितना है? More than 3.5 crore jobs. Implementation कौन सी agency करेगी? EPFO implement करेगी. Salary eligibility cap क्या है? Salaries up to 1 lakh rupees. Wages over 20,000 के लिए employer incentive कितना है? 3,000 rupees per month. Now pause and practice saying ALI targets 3.5 crore jobs implemented by the EPFO. In short, government pays bonuses to freshers and subsidies to employers to boost formal hiring. Beautiful. Topic name is Women's STEM. Broad micro theme is gender in workforce. Heading is Bridging the STEM Employment Gap. Definition. High number of female grads, but lower workforce participation in science and tech. Example, 4 out of 10 engineering grads are women, but only 2 end up working in tech labs. Introduction highlights that 43% of STEM graduates in India are women, highest globally, but only 27% are in the workforce. Background shows female labor force participation rate, or FLFPR, rose to 41.7% in 2023-24. Rural is 47.6%, urban is 25.4%. Globally, 31.5% of researchers are women as per UNESCO. Core logic is that the gender budget increased to 8.8% for 2025-26. UN Women's VSTEM program, along with MP, Gujarat and Micron Foundation, targets skills and mindset. Real-world impact highlights the leaky pipeline between education and careers. Conclusion, we need more community engagement to keep women in STEM jobs. Questions time. India में कितने percentage STEM graduates women हैं? 43%, highest among major economies. लेकिन STEM workforce में कितनी women हैं? Only 27%. दोस्त, rural FLFPR कितना था 23-4 में? 47.6%, higher than urban. Gender budget में कितना increase हुआ? 6.8% से 8.8% हो गया. VSTEM program कौन चला रहा है? UN Women with MP, Gujarat and Micron. Now pause and practice saying, India has 43% female STEM graduates, but only 27% in the workforce. In short, great educational numbers for women in STEM, but we need initiatives like WeSTEM for job retention. Topic name is Chemical Exports. Broad micro theme is Industrial Export Strategy. Heading is Doubling Chemical Exports by 2030. Short definition. Niti Aayog's plan to boost India's share in the global chemical value chain. Real life example, shifting focus from just basic chemicals to specialty chemicals to earn more foreign exchange. Introduction is that Niti Aayog proposed measures to double India's $44 billion chemical exports. Background shows a 2023 trade deficit of $31 billion. India holds 3.5% in GVCs, while China holds 23%. Core logic is to introduce sales-linked incentives. We must shift to specialty chemicals to reach 5 to 6% GVC share by 2030. We also need to revamp existing PCPIRs like Dahej, Paradeep, and Vizag, noting the latter two are far from completion. We will also develop 8 high-potential clusters. Real-world impact is strategic self-reliance and massive export revenue. Conclusion, localizing critical chemicals is the key. Cross questions? Target chemical exports by 2030 कितना है? To double the $44 billion figure, 2023 में trade deficit कितना था? $31 billion का deficit था. Current global value chain share कितना है? Only 3.5% compared to China's 23%. कौन से 3 existing PCPIRs revamp होंगे? दहेज, पारादीप और विजाग. कौन सा incentive नीति आयोग ने propose किया? A sales-linked incentive scheme. Now pause and practice saying, Niti Aayog aims to double chemical exports by revamping PCPIRs. In short, strategic shifts to specialty chemicals and localized production clusters. Awesome. Topic name is GST on online gaming. Broad micro theme is taxation on digital entertainment. Heading is Skill versus Chance Tax Debate. Definition, please. The Supreme Court is debating if playing online games for money is gambling. Example, playing Rummy online. Is it your skill or just luck? If it is luck with money, it attracts 28% GST. Introduction shows the Supreme Court heard arguments between the government and online gaming companies. Background is the debate, do games of skill become games of chance when money is involved? Core logic is that the government insists betting on any game, skill or chance, is gambling. Hence 28% GST on the total entry amount. Companies argue GST should only be on their earnings or platform fees. Real-world impact is that it drastically affects the revenue model of the digital gaming sector. Conclusion, it is a massive legal showdown for the digital economy. Let us do the Q&A. Government online gaming पे कितना GST मांग रहे हैं? Flat 28% GST, दोस्त.
ये 28% किस अमाउंट पर लगेगा एज पर गवर्नमेंट? On the total entry amount. कंपनीज क्या आर्ग्यू कर रही हैं? कि टैक्स सिर्फ उनके अर्निंग्स पर लगना चाहिए। स्किल गेम्स के एग्जांपल्स क्या हैं? रमनी, चेस और ब्रिज। गवर्नमेंट बेटिंग को क्या क्लासिफाई करती है? As gambling, regardless of skill or chance. Now, pause and practice, saying, betting on any game is taxed at 28% GST on the total entry amount. In short, big debate on whether online gaming should be taxed at 28% on entry fee or just platform earnings. Topic name is Niti Aayog and GST. Broad micro theme is cooperative federalism. Heading is the 10th Governing Council meeting. What is this meeting? The apex meeting between the PM and chief ministers for national development. Example, a mega boardroom meeting where state leaders and the center plan the country's economic strategy. Introduction. The 10th Governing Council meeting of Niti Aayog was held. Background is that it was formed in 2015 and reconstituted in 2021 for cooperative federalism. Core logic is that the council meets once a year, though rules say quarterly. It includes the PM as chairman, CMs, and LT governors. It addresses intersectoral issues. Also, GST registration is mandatory if all India turnover is above 40 lakh rupees for goods and 20 lakh for special category states. For services, it is above 20 lakh and 10 lakh for special. Real-world impact is policy alignment across states. Conclusion. A critical platform for federal financial consensus. Questions. Time. Niti Aayog Governing Council कितनी बार मिलती है? Only once a year, practically. इस काउंसिल को चेयर कौन करता है? The Prime Minister. गुड्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्या है नॉर्मली? Turnover above 40 lakh rupees. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में गुड्स का थ्रेशोल्ड? 20 lakh rupees. याद रखना. सर्विसेज के लिए जनरल थ्रेशोल्ड क्या है? Above 20 lakh rupees. Now, pause and practice saying GST registration for goods is mandatory above 40 lakh rupees turnover. In short, the National Planning Council balancing state and central financial policies. Next topic. Name is tax contribution versus devolutions. Broad micro theme is center-state financial relations. Heading is the state-wise tax divide. Short definition. Some states pay more taxes to the center but get less back in return. Real life example. Maharashtra paying 100 rupees in tax but getting only 6 rupees back, while Bihar pays less but gets more for development. Nance Commission formula dictates these devolutions. Code logic shows Maharashtra has the biggest negative difference. It contributes 36.1% of total revenue but receives 6.65%. Other negatives are Karnataka at 8.8 percentage points, Haryana at 4.3, Gujarat at 3.5, and Tamil Nadu at 2.95. Positives include Bihar getting 8 percentage points more than it contributes, MP getting 5.5, and Rajasthan 3.55. Real-world impact sparks federal debates on equity versus efficiency. Conclusion is that it is a complex balance of supporting developing states while rewarding high-growth states. Cross questions. सबसे बड़ा नेगेटिव डिफरेंस किस स्टेट का है? महाराष्ट्र का दोस्त. महाराष्ट्र कितना कंट्रीब्यूट करता और कितना मिलता है? कंट्रीब्यूट्स 36.1%, गेट्स 6.65%. कर्नाटका का नेगेटिव डिफरेंस कितना है? 8.8 percentage points. बिहार को कितना पॉजिटिव डिफरेंस मिलता है? 8 percentage points extra. एमपी को कितना एक्सेस डिवोल्यूशन मिलता है? 5.5 percentage points. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग tax devolutions balance national development across different states. In short, wealthier states contribute more to the central pool than they receive back. Very insightful. Topic name is Tobacco Control. Broad it. Micro theme is health and taxation. Heading is GST's impact on tobacco use. Definition. Taxes on tobacco have not increased enough under GST to reduce smoking. Example, a packet of cigarettes has not become significantly more expensive since 2017 to deter a 15-year-old from buying it. Introduction points are where GST replaced multiple taxes in 2017 under One Nation, One Tax. Background is that 28.6% of adults and 8.5% of school children consume tobacco. Core logic reveals that post-GST, there were no major tax hikes. The burden is below the WHO's 75% recommendation. BDs are at 22%, cigarettes at 54%, and smokeless at 65%. GST relies on ad valorem taxes, which are less effective than specific excise taxes. Central excise share dropped heavily. Real-world impact is a huge public health concern as affordability remains high. Conclusion, health experts want specific excise taxes back on tobacco. Let us ask the questions. WHO का recommended tobacco tax burden क्या है? 75%. याद रखना. इंडिया में सिगरेट्स पे टैक्स कितना है? Around 54%. BDs पर टैक्स कितना है? Only 22% दोस्त. स्कूल चिल्ड्रन में टोबैको कंजम्पशन कितना है? About 8.5%. GST किस टाइप का टैक्स रिलाई करता है? Ad valorem taxes, जो less effective हैं यहाँ. Now, pause and practice saying India's tobacco tax burden is below the WHO's 75% recommendation. In short, GST has not made tobacco expensive enough to stop people from consuming it. Topic name is GST Compensation Cess. Broad micro theme is post-COVID economic recovery. Heading is Abolishing the Compensation Era. Definition. An extra tax on luxury goods to compensate states is now ending. Example, buying a luxury SUV meant paying 28% GST plus an extra cess. Now, that cess era is over.
Introduction mentions GST collections in June 2025 were 1.85 lakh crore rupees, the lowest in 4 months. Background is that as a consumption tax, low collections mean lower economic activity. Remember, fuel and alcohol are outside GST. Core logic is that this cess was levied above the 28% slab. Initially meant for 5 years, it was extended to March 2026 to repay COVID loans. Now, it stands abolished. Real-world impact lowers the price of luxury or sin goods slightly, altering state revenue compensation. Conclusion marks a mature phase of the GST regime. Questions time. June 2025 में GST collection कितना था? 1.85 lakh crore rupees. GST compensation cess किस स्लैब के ऊपर लगता था? 28% स्लैब के ऊपर. सेस कब तक एक्सटेंड किया गया था? मार्च 2026 तक कोविड लोन्स के लिए. कौन से मेजर आइटम्स जीएसटी के बाहर हैं? फ्यूल एंड अल्कोहल. अब जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का स्टेटस क्या है? It stands abolished. Now pause and fact is saying the GST compensation cess has been abolished. In short, the extra tax meant to protect state revenues post-GST is finally gone. Speaking of GST, topic name is GST Reforms 2025. Broad micro theme is tax rationalization. Heading has been used simplified slabs. Definition: GST slabs reduced from 4 to 2 main ones, plus a luxury slab. Example, everyday items like toothpaste got cheaper, but an expensive designer dress got a higher tax. Introduction. The 56th GST Council meeting approved major reforms effective September 2025. Background is that GST was introduced in 2017 via the 101st Amendment. Core logic is that 4 slabs, which were 5, 12, 18 and 28, are reduced to 2, matlab 5% and 18%. A new 40% slab is created for luxury and sin goods. Common goods like ACs and toothpaste are cheaper. Clothes above 2,500 rupees are taxed at 18%. There are 7 pillars of reform, including rate rationalization and greening GST. The FM also launched GSRT for fast justice. Real-world impact aims for a virtuous cycle of cheaper goods leading to consumption, then production, then jobs. Conclusion: simplifies compliance and boosts mass consumption. Cross questions. पुराने 4 slabs की जगह अब कौन से 2 main slabs हैं? 5% and 18%. Luxury goods के लिए नया slab कौन सा है? The new 40% slab. GST किस amendment से आया था? 101st Amendment in 2017. Clothes costing more than 2,500 rupees पे कितना टैक्स है? 18% GST लगेगा. Dispute solve करने के लिए क्या launch हुआ? GSAT-T or GST Appellate Tribunal. Now pause and practice saying. The 2025 reforms simplify GST into 5% and 18% slabs. In short, a simpler tax system to make everyday goods cheaper and boost the economy. Topic name is Dependence on Central Transfers. Broad micro theme is state fiscal autonomy. Heading is How States Fund Themselves. Definition, please. States rely heavily on the central government for their budget. Example, a state wants to build a highway, but 44% of the money for it has to come from the center's transfers. Introduction is that Article 280 for Finance Commission and Articles 268 to 293 define center-state relations. Background is that the 80th Amendment introduced global sharing. FC share rose over time to 41%, but actual devolution is lower due to cesses. Core logic is that central transfers constitute 44% of states' revenue receipts. Pre-GST expenditure ratio was center 47% and states 53%. Post-GST, it is 48 to 52. The rise in the center spending is linked to expanded centrally sponsored schemes. Real-world impact is that states feel a loss of fiscal autonomy. Conclusion is a delicate tug-of-war for financial independence. Questions. States की revenue का कितना % central transfers होता है? 44% दोस्त, कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन डिफाइन करता है? Article 280. कौन से अमेंडमेंट ने ग्लोबल शेयरिंग इंट्रोड्यूस की? 80th Amendment ने. FRC recommended devolution post JNK कितना है? 41% है. क्यों एक्चुअल devolution कम मिलता है? Due to rising cesses and surcharges. Now, pause and practice saying, central transfers constitute 44% of states' revenue receipts. In short, states depend heavily on central funds, causing debates over financial freedom. Let us look at a specific sector. Topic name is Apparel GST. Broad micro theme is textile industry taxation. Heading is Taxing the Wardrobe. What is the short definition? Adjusting taxes so synthetic fibers and expensive clothes are taxed logically. Example, a simple synthetic shirt is cheaper now at 5% tax, but a 3,000 rupee branded kurta is taxed at 18%. Introduction. The domestic apparel market is $100 billion, with ethnic wear being 25%. Background is correcting the inverted duty structure. Core logic is that ready-made garments above 2,500 rupees attract 18% GST, classified as luxury. Earlier, it was above 1,000 rupees, attracted 12%. A sari worth 1 lakh is taxed at 5% because it is a textile, while a salwar suit above 2,500 is 18%. Man-made fiber, or M&F, products are unified to 5%.
Real world impact streamlines the synthetic textile sector but makes premium ready-mades costlier. Conclusion, a mixed bag for fashion lovers. Cross questions. Apparel market का total size क्या है? $100 billion estimated. Ready-made garments above 2500 rupees पे नया GST कितना है? 18% GST. साड़ी पर कितना GST लगता है चाहे कितनी भी महंगी हो? Only 5% as it is a textile. मैनमेड फाइबर प्रोडक्ट्स पे यूनिफाइड GST कितना है? 5% यूनिफाइड कर दिया गया है. पहले ब्रांडेड गारमेंट्स ओवर 1000 रुपीस पे कितना टैक्स था? 12% GST लगता था. Now pause in practicing. Man-made fiber products now have a unified 5% GST. In short, uniform taxes for synthetic textiles but higher taxes for expensive ready-made clothes. Topic name is Workforce Profile and Future of Work. Broad micro theme is Demographics and IT sector. Heading is India's 643 million workers. Definition. India's massive young labor force is preparing to dominate globally. Example, while older countries lack young workers, India will supply 66% of new global workers. Introduction notes that 65% of India's population is under 35. This is the demographic dividend in action. Background? Between 2017 to 24, 16.83 crore jobs were created, and unemployment declined from 6% to 3.2% GDP. However, it faces issues like AI automation, restrictive US H-1B visa policies, and skill mismatch. Real-world impact is tremendous potential if upskilled. Otherwise, a crisis. Conclusion, the youth is our biggest asset and challenge. Let us test this. India का total workforce कितना बड़ा है? 643 million workers. Global new workforce entrance में India का share क्या होगा? 66% दोस्त. IT sector GDP में कितना contribute करता है? Around 7%. पर IT sector employment कितना देता है? Only 1% of the workforce? IT sector के major challenges क्या है? AI automation and restrictive US immigration policies. Now pause and practice saying, India expects to supply 66% of new global workforce entrants. In short, a young, massive workforce facing modern tech and visa challenges. Continuing with workforce, topic name is Digital Labor Chalk. Broad micro theme is formalizing informal labor, Heading is an app for daily wage workers. Definition. digitizing traditional city corners where workers wait for jobs. Example, a mason does not need to stand at a crossroads. They can be hired via an app by a contractor. Introduction. It is a Union Labour Ministry initiative under the eShram 2.0 framework. Background is that CWFI questioned its launch, but the government aims to formalize the urban workforce. Core logic is that it is a B2C and B2B marketplace. It connects workers directly to households, cutting middlemen. It uses GIS tagging and links automatically to PMSYM for pension and accident insurance via UAN. It also integrates with the Skill India Digital Hub. Real-world impact means social security and dignity for daily wages. Conclusion? Tech bridging the gap for the informal sector. Let us do the Q&A. Digital Labor Chalk किस framework के अंदर है? E-Shram 2.0 framework के अंदर. किस यूनियन ने इसको क्वेश्चन किया? Construction Workers Federation of India or CWFI. प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस क्या है? Eliminating middleman commissions. वर्कर्स की लोकेशन कैसे ट्रैक होती है? GIS tagging के through. कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लिंक होती हैं? PMSBM or accident insurance. Now pause and practice saying Digital Labor Chalk links daily wages to PMSVM via UAN. In short, an app that gets daily wages, direct jobs, and social security benefits. Excellent. Topic name is menstrual leaves. Broad micro theme is workplace equity. Heading is Karnataka's progressive policy. Definition. Mandating 1 day of paid leave per month for menstruating women. Example, a female factory worker or IT professional getting a guaranteed rest day every month without losing pay. Introduction is that Karnataka became the first state to approve 1 day of paid leave per month. Background is the long-standing demand for gender-sensitive workplace policies. Core logic is that it applies to all women employees across government offices, educational institutions, factories, and private organizations. Real-world impact sets a precedent for a national labor policies. Conclusion, a massive step toward workplace equity. Questions. कौन सा state first बना to approve this? कर्नाटका दोस्त, कितने दिन की लीव अप्रूव्ड है? 1 day of paid leave per month? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए है? नहीं, private और factories सभी के लिए. इस पॉलिसी का कोर एजेंडा क्या है? Gender-sensitive workplace policies. Is it a paid or unpaid leave? Karnataka approved 1 day of paid menstrual leave per month. In short, Karnataka leads India in providing paid menstrual leaves across all sectors. Topic name is PLFS. Broad micro theme is labor market statistics. Heading is revamping the employment survey. Definition. Updating how India counts its employed and unemployed people. Example. Instead of asking people once a year about their job, surveyors will now check in monthly. Introduction. The Government of India is revamping the periodic labor force survey, started by NSSO in 2017.
Background is the need for high-frequency indicators to match dynamic economies. Core logic is that it will provide monthly estimates for rural and urban areas under current weekly status or CWS. It shifts to a calendar year from 2025. Households are visited 4 times over 4 months. Usual status equals past 365 days and CWS equals last 7 days. Real-world impact is faster, more accurate data for policymaking compared to current quarterly or annual releases. Conclusion: real-time data for real-time problems. Let us check the facts. PLFS कब और किसने स्टार्ट किया था? NSSO ने 2017 में, अब नए PLFS में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Monthly estimates under CWS. CWS का मतलब क्या होता है? Current weekly status, past 7 days का डेटा, Usual status का reference period क्या है? past 365 days दोस्त। 2025 से रिजल्ट्स किस ईयर फॉर्मेट पे बेस्ड होंगे? Calendar year, January to December. Now, pause and practice saying the revamped PLFS will provide monthly employment estimates. In short, faster and more frequent surveys to get an accurate picture of India's job market. Topic name is Unemployment, PLFS. Broad micro theme is employment trends. Heading is Current Job Statistics. Short definition: Recent data showing employment rising and unemployment dropping. example, more people in rural areas are engaged in self-employment, like farming, reducing the official rural unemployment rate. Introduction notes, PLFS shows overall unemployment among 15 plus drop to 5.2%. Background is analyzing sector-wise distribution. Core logic reveals rural unemployment is 4.4%, urban is 6.2% for males and 9.0% for females. Rural dominates in self-employment, with agriculture employing 57.7%. Urban dominates in the tertiary sector at 62%. FLFPR increased to 33.7%, overall LFPR to 55.8%. Real-world impact shows heavy reliance on agriculture despite economic growth. Conclusion: good numbers, but structural shift to manufacturing is still lagging. Questions: overall unemployment rate 15 plus कितना drop हुआ? 5.2% पर आ गया। रूरल वर्कफोर्स का कितना % एग्रीकल्चर में है? 57.7%. अर्बन एरियाज में कौन सा सेक्टर डोमिनेंट है? Tertiary sector employing 62%. अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? It edged up to 9.0%. LFPR नवंबर में कितना पहुंच गया? 55.8%, driven by rural areas. Now, pause and practice saying the tertiary sector employs 62% of the urban workforce. In short, unemployment is technically down, but most rural jobs are still in agriculture. Topic name is gig workers. Broad micro theme is the gig economy. Heading is redefining platform labor. What is it? Delivery partners and drivers lacking formal job security. Example, a food delivery driver working 12 hours, but not getting PF or health insurance because they are not employees. Introduction: the 2025 budget recognized them, but PLFS 2025 did not properly classify them. Background is that they fall into ambiguous categories like self-employed or casual labor. Films like Zwigato highlight their struggles. Core logic shows Niti Aayog projects growth from 7.7 million in 2020-21 to 23.5 million by 2029-30. The gig economy could employ up to 9 crores by 2030. They're currently excluded from Industrial Disputes Act 1947 safeguards. Real-world impact is a massive workforce without traditional safety nets. Conclusion: the laws need to catch up with the app-based economy. Cross questions: नीति आयोग के हिसाब से 2029-30 तक कितने गिग वर्कर्स होंगे? Around 23.5 million. कौन सी फिल्म ने गिग वर्कर्स का स्ट्रगल दिखाया? 2022 हिंदी फिल्म ज़्विगाटो ने। PLFS इन्हें किन कैटेगरीज में डालता है? Ambiguous categories like self-employed, By 2030 टोटल गिग इकोनॉमी कितने वर्कर्स एम्प्लॉय कर सकती है? up to 9 crore workers. ये किस एक्ट के सेफगार्ड से एक्सक्लूडेड है? Industrial Disputes Act 1947. Now pause and practice saying India's gig workforce is projected to reach 23.5 million by 2030. In short, app-based workers are growing rapidly, but official data and protections are lagging. Topic name is CII Partnership Summit 2025. Broad micro theme is geoeconomics and trade, Heading is the 30th edition in Vizag. Definition: a major summit to navigate global trade and technology. example, global leaders meeting in Andhra Pradesh to discuss how AI and trust will shape future business. Introduction: the 30th edition was held in Visakhapatnam, AP. Background is that it was organized by CII with the Ministry of Commerce and the AP government. Core logic is the theme, technology, trust, and trade, navigating the new geo-economic order. Real-world impact attracts foreign investments and aligns Indian industry with global standards. Conclusion: showcases India's readiness for the new global economy. Questions: CII Summit 2025 कहाँ हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा एडिशन था? 30th edition था. इसका थीम क्या था? टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, किसके कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज हुआ? CII, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और AP गवर्नमेंट, फोकस एरिया क्या था? navigating the new geo-economic order. Now pause and practice saying
The 30th CII Partnership Summit was held in Visakhapatnam. In short, a premier platform in WISAG, shaping India's future trade policies. Topic name is Workplace Accidents. Broad micro theme is industrial safety. Heading is The High Cost of Industrial Growth. Definition. India's grim record of fatal workplace incidents and the history of safety laws. Example, a factory worker injured by machinery relying on old laws for compensation. Introduction notes the British Safety Council estimates 1 in 4 fatal workplace accidents worldwide occur in India. Background is that the first law was the Factories Act of 1881. Later, the 1948 Act covered licensing, hours, and canteens. Core logic shows Workmen's Compensation Act 1923 and ESIC 1948 ensure compensation but do not hold employers criminally accountable. The OSHWC Code 2020 was enacted to consolidate 13 existing laws. Real-world impact highlights the urgent need for strict safety enforcement. Conclusion, compensation is not enough, prevention is key. Questions. इंडिया में global fatal accidents का कितना शेयर है? 1 in 4, roughly 25%. इंडिया का पहला लेबर सेफ्टी लॉ कौन सा था? Factories Act 1881. किस एक्ट के अंडर एम्प्लॉयर्स क्रिमिनली अकाउंटेबल नहीं होते? Workmen's Compensation Act 1923. OSHWC Code 2020 कितने लॉज कंसोलिडेट करता है? 13 एग्जिस्टिंग लॉज को. Factories Act 1948 किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? Decent working conditions and safety go hand in hand. Now, pause and practice saying the OSHWC Code 2020 consolidates 13 existing labor safety laws. In short, despite historical laws, workplace safety in India requires the strong enforcement of the new codes. Topic name is Labor Codes. And remember, we are discussing this without any political bias regarding the union protests. Broad micro-theme is comprehensive labor reforms. Heading is Overhauling 29 Fragmented Laws. Definition. 4 massive codes replacing decades-old, confusing labor rules. Example, instead of applying for 10 different licenses under old laws, a factory now just gets one Pan-India license. Introduction. The Center notified 4 labor codes. Background is that the Second National Commission on Labor recommended this, as labor is in the concurrent list. Core logic covers 4 codes: wages, industrial relations, social security, and OSHWC. Passed in 2019-20, 32 states pre-published rules, though West Bengal and Lakshadweep published 0. Delhi only did wages, and TN is missing social security. The code on wages brings a statutory floor wage. Social security extends to gig workers, and PF is voluntary if salary is above 15K. It introduces single registration and license. Real-world impact is formalization, mandatory appointment letters, and free annual health checkups. Conclusion, simplifies business compliance while boosting basic worker rights. Let us test our memory. कितने fragmented laws replace हुए हैं? 29 fragmented laws. कौन से states ने एक भी draft rule pre-publish नहीं किया? वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप ने. मिनिमम वेजेस के लिए नया कॉन्सेप्ट क्या है? Statutory floor wage का concept. सोशल सिक्योरिटी कोड किस नए ग्रुप को कवर करता है? Gig and platform workers को. कंप्लायंस बर्डन कैसे कम हुआ? Through single registration and single return. Now pause and practice saying the 4 labor codes replace 29 fragmented laws with a single registration system. In short, a historic shift moving India from complex old rules to 4 simplified worker-centric codes. Topic name is Shram Shakti Niti 2025. Broad micro theme is future labor policy. Heading is the blueprint for 2047. Definition. A draft policy for universal social security and a unified workforce ecosystem. Example, a single universal account that holds a worker's PF, health insurance, and state benefits together. Introduction. The draft National Labour and Employment Policy was released for consultation. Background shows it is rooted in India's civilizational ethos of Shrama Dharma, meaning dignity of work. Core logic is the target universal portable social security, female LFPR to 35% by 2030, and near zero fatalities. Phase 1 is 2025 to 27 for integration. Phase 2 is 27 to 30 for rollout. Phase 3 is beyond 2030 for paperless analytics. The Labour and Employment Policy Evaluation Index, or LPEI, will benchmark states. Real-world impact is a massive AI-driven governance model for labor. Conclusion, preparing India's workforce for the developed nation status. Cross questions. इस पॉलिसी का फिलॉसफिकल रूट क्या है? Shrama Dharma, the dignity of work. 2030 तक फीमेल LFPR का टारगेट क्या है? 35% target है. कौन सा नया इंडेक्स स्टेट्स को बेंचमार्क करेगा? Labor and Employment Policy Evaluation Index, LPEI. Phase 1 का टाइमलाइन क्या है? 2025 से 2027 तक यूनिवर्सल अकाउंट किन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करेगा? EPFO, ESIC, PMJAY और eShram को. Now pause and practice saying Shram Shakti Niti aims for 35% female labor force participation by 2030. In short,
a futuristic AI-driven plan to provide universal social security to every Indian worker. Topic name is short selling. Broad micro theme is financial markets, Heading is selling what you don't own. Definition. a trading strategy where you sell shares first and buy them back later at a lower price. Example, you borrow and sell a share at 100 rupees, wait for it to drop to 80, buy it back, return it, and keep 20 rupees profit. Introduction notes that shorting allows making money in a falling market. Background is that it is regulated by market authorities to prevent crashes. Core logic is that in the spot market or cash, it is intraday only, meaning you must square off by 3:30 p.m. with no carry forward. In the futures market, it can be rolled over, but requires margin. Defaulting leads to short delivery and hefty auction penalties, highly risky for illiquid stocks. Real world impact adds liquidity but carries infinite risk. Conclusion, high reward, extremely high risk. Questions time. Spot market में short selling की condition क्या है? इंट्राडे होती है, स्क्वायर ऑफ बाय 3:30 p.m. क्या कैश सेगमेंट में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती है? नहीं, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है. फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड के लिए क्या चाहिए? मार्जिन मनी जरूरी है. स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो क्या होता है? शॉर्ट डिलीवरी डिफॉल्ट होता है. शॉर्टिंग सबसे ज्यादा रिस्की कहाँ होती है? लिक्विड स्टॉक्स में दोस्त. Now, pause and practice saying intraday short positions in the cash segment must be squared off the same day. In short selling lets you bet against a stock, but failing to buy it back causes huge penalties. Last topic. Topic name is SEBI Conflict of Interest. Broad micro theme is regulatory governance. Heading is Overhauling Board Regulations. Definition. SEBI updating rules to prevent its own members from having financial conflicts. Example, a referee should not be betting on the match. Similarly, SEBI members cannot have conflicting investments. Introduction shows SEBI proposed expanding the definition of family and investment restrictions. Background notes, this was formed after allegations against a former SEBI chief, who was later exonerated. Core logic relies on the committee headed by former CVC chief Pratyush Sinha. It aims to strengthen disclosures for board members. Real-world impact restores and maintains extreme public trust in the stock market regulator. Conclusion, ensuring the watchdog is above suspicion. Last set of questions, SEBI ने किस चीज की डेफिनेशन एक्सपैंड करने को प्रपोज किया? Definition of family को. कमिटी किसने हेड की थी? Former CVC chief Pratyush Sinha ने. मेन गोल क्या है इस ओवरहॉल का? To strengthen disclosures and place investment restrictions. ये किसकी एलिगेशंस के बाद स्टार्ट हुआ? A former SEBI chief, though she was exonerated, ये रूल्स किस पे अप्लाई होंगे? SEBI board members पर. Now pause and practice saying the Pratyush Sinha committee overhauled SEBI's conflict of interest rules. In short, strict new investment rules for SEBI members to ensure a completely fair market. Let us do a quick super recap of our entire journey today. First, trade and consumer rules like CGSE, e-commerce origin filters, dark patterns, and CCPA. फिर macro economy and industry, including Dutch disease, SEZ, chip norms, QCOs, chemical exports, और the ELI scheme. उसके बाद GST का पूरा system, from gaming taxes to state devolutions, tobacco cess, और 2025 new slabs. Then labor reforms की दुनिया, covering gig workers, PLFS statistics, Gujarat factory rules, menstrual leaves, the 4 labor codes, और Shram Shakti Niti 2025. And finally, financial markets, discussing short selling mechanics or SEBI conflict rules. Perfect summary. Now think about this. With AI automation threatening jobs and massive structural changes like the 4 labor codes, क्या हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इस 643 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बना पाएगी? एकदम माइंड बेंडिंग थॉट है. Think about that paradox, दोस्त. तो दोस्त, इस चर्चा को यहीं रैप करते हैं. कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे क्यूरियस और अपने नोट्स रिवाइज करते रहना. सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव. क्या बात है दोस्त, इमेजिन दिस. इंडिया का क्लीन एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 50% क्रॉस कर चुका है, बट एक्चुअल पावर जनरेशन में इसका शेयर लेस देन 30% है. माइंड बॉगलिंग गैप है ये. राइट. ऐसे ही माइंड बेंडिंग इनसाइट्स आज हम एक्सप्लोर करेंगे. आज के इस डीप डाइव में हम मैसिव टॉपिक्स कवर करेंगे. सेबी रिफॉर्म्स, बॉन्ड मार्केट्स, फीमा, एनर्जी ट्रांजिशंस और एथेनॉल ब्लेंडिंग. सो ग्रैब अ कॉफी और चलो स्टार्ट करते हैं ये मैसिव लर्निंग जर्नी. एब्सोल्युटली. पूरा लैंडस्केप डिकोड करेंगे हम. चलो, लेट्स हिट अ फर्स्ट सेक्शन. टॉपिक नेम SEBI regulations and reforms. Broad micro theme, market regulation and investor protection. परफेक्ट. इसका क्लियर हेडिंग है SEBI गाइडलाइंस एंड रिफॉर्म्स. Basically, ये regulatory updates हैं by SEBI to protect investors. Market safety standards को upgrade करना, right? हाँ, बिल्कुल. एक रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. अगर एक रिटेल इन्वेस्टर का SIP 3 बार कंसेक्यूटिवली फेल होता है, तो अब वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा. ये ट्रांसपेरेंट डेटा प्रोसेसिंग इंश्योर करता है. मतलब SEBI actively regulatory loopholes fix कर रहा है. एग्जैक्टली. बैकग्राउंड ये है कि हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट थोड़ा शैलो और ओपेक है. NBFCs बैंक्स की तरह सिस्टमिक रिस्क पोज कर रहे थे विदाउट फुल ओवरसाइट. तो इसका core logic क्या हुआ? कोर लॉजिक एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी है. फैमिली का डेफिनेशन एक्सपैंड हो गया टू इंक्लूड लीगल गार्डियंस एंड ब्लड और मैरिज रिलेटिव्स अलाइंड विद कंपनीज एक्ट 2013. और क्योंकि हम FATF मेंबर हैं, KYC और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स यानी UBO थ्रेशोल्ड्स ट्रैक करना मैंडेटरी है. UBO लिमिट 10% फॉर कंपनीज और 15% फॉर पार्टनरशिप्स. Makes sense. और unregistered influencers के ads पर भी तो बैन है? राइट.
नो एड्स विद अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स, सिर्फ वेरीफाइड यूपीआई अकाउंट्स। और एफएनओ ओपन इंटरेस्ट को मैनिपुलेट होने से रोकने के लिए एक नया डेल्टा बेस्ड मेथड लाया गया है। जिसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डायरेक्ट साइबर फ्रॉड्स प्रिवेंट करना है। और यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस के लिए यूबीओ थ्रेशोल्ड्स और डेल्टा बेस्ड मेथड की हैं। कंक्लूजन यही है कि एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी इज द फोकस। बिल्कुल सही। अच्छा, एक क्विक क्रॉस क्वेश्चन राउंड हो जाए दोस्तों के लिए। एफएटीएफ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यूबीओ लिमिट क्या है? 10% फॉर कंपनीज, 15% फॉर पार्टनरशिप्स। नया फैमिली डेफिनेशन किस एक्ट से मैच करता है? कंपनीज एक्ट 2013। एसआईपी कैंसिलेशन की एएमसी टाइमलाइन क्या है? Within 10 days of investor request. एफएनओ ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए नया मेथड क्या है? The delta-based method. और अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स पे क्या बैन है? No SEBI-regulated entity can advertise with them. Awesome. Now pause and practice saying delta-based method weighs open interest by price sensitivity. Great. In short, SEBI's new framework ensures market integrity and compliance. याद रखना. Moving to the next one. Topic name Securities Market Code Bill 2025. Broad micro theme Legal Consolidation. Right. Clear heading है Securities Market Code Bill 2025. ये बेसिकली 3 मेजर मार्केट लॉस को एक मॉडर्न फ्रेमवर्क में यूनिफाई कर रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं तो जैसे 3 अलग रिमोट कंट्रोल्स की जगह एक यूनिवर्सल रिमोट यूज करना। हाँ, एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन देखें तो ये यूनियन बजट 2021-22 में अनाउंस हुआ था। बैकग्राउंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करना। कोर लॉजिक पे आते हैं। ये SCRA 1956, सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को कंसोलिडेट कर रहा है। सेबी मेंबर्स 9 से 15 हो गए हैं। हाँ, चेयर, 2 गवर्नड, 1 आरबीआई और 11 अदर्स। मिनिमम 5 होल टाइम मेंबर्स चाहिए। माइनर प्रोसीजरल वायोलेशंस अब डीक्रिमिनलाइज हो गए हैं इनटू सिविल पेनल्टीज। तो क्रिमिनल पनिशमेंट सिर्फ मार्केट अब्यूज और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए रिजर्व्ड है। राइट। और बोर्ड मेंबर्स को अपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने ही होंगे। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है कैपिटल मोबिलाइजेशन बूस्ट करना, यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस है, एसईबी बोर्ड कंपोजिशन चेंजेस। कंक्लूजन यही है कि ये तो मेजर स्टेप टुवर्ड मॉडर्नाइजिंग रेगुलेटरी आर्किटेक्चर। लेट्स डू द क्वेश्चंस। बिल किन 3 लॉज को कंसोलिडेट कर रहा है? SCRA 1956, सेबी एक्ट 1992 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। सेबी बोर्ड में अब कितने मेंबर्स होंगे? Increased from 9 to 15 members. माइनर वायोलेशंस का अब क्या होगा? Decriminalized into civil penalties. क्रिमिनल पनिशमेंट किन ऑफेंसेस के लिए रिटेन्ड है? Market abuse and insider trading. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंट करने के लिए क्या रूल है? Mandatory disclosure of direct or indirect interests by board members. Superb. Now, pause and practice saying the bill decriminalizes minor violations into civil penalties. In short, the bill modernizes laws and expands the SEBI board. Next up, topic name cat bonds, broad micro theme disaster risk finance. इसका क्लियर हेडिंग है कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स। ये हाइब्रिड इंश्योरेंस कम डेट प्रोडक्ट्स हैं फॉर शिफ्टिंग ग्लोबल हैजर्ड रिस्क्स। रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो अगर कोई कंट्री अर्थक्वेक फेस करती है तो इन्वेस्टर्स अपना प्रिंसिपल लूज कर देते हैं, बट कंट्री को रैपिड पे आउट्स मिल जाते हैं। यस, ये सॉवरेन नेशंस के लिए क्रूशियल फाइनेंशियल टूल है। बैकग्राउंड ये है कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस स्लो होता है तो ये फास्टर पे आउट्स ऑफर करते हैं। कोर लॉजिक काफी इंटरेस्टिंग है। सॉवरेन नेशंस स्पॉन्सर करते हैं और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरमीडियरीज इन्हें इशू करते हैं। एग्जैक्टली। ये हैजर्ड रिस्क को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे शिफ्ट करता है और काउंटर पार्टी रिस्क रिड्यूस करता है। डिजास्टर में प्रिंसिपल लॉस होता है, इसलिए हायर कूपन रेट्स होते हैं। अर्थक्वेक्स के लिए 1-2% और साइक्लोन्स के लिए और हायर। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज फाइनेंशियल रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस में बॉन्ड मैकेनिज्म और कूपन रेट लॉजिक इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चंस प्लीज। कैट बॉन्ड्स का मेन पर्पस क्या है? टू शिफ्ट हैजर्ड रिस्क टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। इशू कौन करता है इन बॉन्ड्स को? इंटरमीडियरीज लाइक द वर्ल्ड बैंक। प्रीमियम कौन पे करता है? Sovereign nations sponsor them and pay premiums. इन्वेस्टर्स को हायर कूपन रेट क्यों मिलता है? Due to the risk of losing principal during a disaster, किस डिजास्टर का कूपन रेट हायर होता है? cyclones and hurricanes are usually higher than earthquakes. Brilliant. Now pause and practice saying cat bonds shift hazard risk and reduce counterparty risk. In short, cat bonds convert insurance into tradable securities for quick disaster payouts. Awesome. Topic name Tier 1 and 2 bonds. Broad micro theme bank capital buffers. Clear heading है Tier 1 and 2 bonds. ये essentially debt instruments हैं used by banks to absorb losses and maintain capital buffers. Real life example, एक financial shock absorber जो बैंक liquidation से पहले losses झेलता है। Right. Intro ये है कि they are crucial for Basel III norms compliance. Background है preventing bank failures during financial stress. कोर लॉजिक समझते हैं। टीयर 1 जिसे AT1 भी कहते हैं वो कोर या गोइंग कंसर्न बफर है, परपेचुअल होता है, कॉलेबल आफ्टर 5 years, हाई लिक्विडिटी, अनसिक्योर्ड।
हाँ, और इनके नॉन क्यूमुलेटिव डिस्क्रिशनरी कूपन्स होते हैं और ये टीयर 2 से जूनियर होते हैं। टीयर 2 सप्लीमेंट्री या गॉन कंसर्न बफर है। इनकी फिक्स मैच्योरिटी मिनिमम 5 इयर्स होती है, लोअर लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडेशन में ये टियर 1 के सीनियर होते हैं विद फिक्स्ड रेगुलर कूपन्स। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है सिस्टमैटिक बैंकिंग स्टेबिलिटी। प्रीलिम्स रेलेवेंस है सबऑर्डिनेशन एंड गॉन वर्सेस गोइंग कंसर्न बफर्स। कंक्लूजन एसेंशियल सेफ्टी नेट्स फ्रॉम मॉडर्न बैंक्स। क्विक क्वेश्चंस, कौन सा बॉन्ड गोइंग कंसर्न बफर है? टीयर 1 bonds. टियर 1 मैच्योरिटी क्या होती है? They are perpetual callable after 5 years. लिक्विडेशन के टाइम कौन सा बॉन्ड सीनियर है? Tier 2 is senior to Tier 1. टियर 2 का मेन पर्पस क्या है? Secondary buffer post Tier 1 as a gone concern. किस बॉन्ड में कूपन पेमेंट्स डिस्क्रेशनरी हैं? Tier 1 bonds. Got it. Now pause and practice saying tier 1 is a going concern buffer while tier 2 is a gone concern buffer. In short, Tier 1 absorbs operating losses. Tier 2 helps during liquidation. Topic name KIFB Masala Bond Probe. Broad micro theme regulatory scrutiny. Heading KIFP Masala Bond Probe. Short explanation, investigation into FEMA violations regarding external commercial borrowing funds. Real life scenario देखें तो raising funds abroad for infrastructure but illegally buying local land. Exactly. इंट्रो में देखें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केरला सीएम को शो कॉज नोटिस दिया है। केरला पहला स्टेट था जिसने 2019 में मसाला बॉन्ड स्टैप किए थे। Core logic ये है कि funds rupee denominated bonds के थ्रू लंदन और सिंगापुर एक्सचेंजेस पर ECB के अंडर रेज हुए। एक्शन प्रोवोक इसलिए हुआ क्योंकि ECB funds कैन नॉट बी यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर लैंड परचेस। बिल्कुल प्रोहिबिटेड है वो। Real world impact is strict enforcement of end use restrictions. Prelims relevance है ECB prohibited activities under FEMA. Conclusion, regulatory boundaries are absolute. Let's hit the questions. KIIFB probe कौन लीड कर रहा है? Enforcement Directorate, ये बॉन्ड्स किन एक्सचेंजेस पे फ्लोट हुए थे? London and Singapore, stock exchanges. वायलेशन किस स्पेसिफिक एक्ट का हुआ है? FEMA violations, मसाला बॉन्ड्स के फंड्स किस इलीगल एक्टिविटी में यूज हुए? specifically prohibited land purchase. केरला ने ये बॉन्ड्स पहली बार कब इशू किए? In 2019. Spot on. Now, pause and practice saying masala bonds under ECB have strict end use restrictions. In short, KIIFB probe highlights the critical nature of FEMA guidelines. Okay, next. Topic name, various bonds. Broad, micro-theme, debt instruments overview. Heading. Various types of bonds. Basically, different debt instruments catering to varying risk appetites. Example के लिए safe returns चाहिए तो government bond, early exit चाहिए तो putable bond. Intro है कि bond market offers diverse instruments, capital generation के लिए essential है. Core logic के types बहुत interesting हैं. हाँ, government bonds safe होते हैं, corporate bonds में higher risk return है, म्यूनिसिपल लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं और जीरो कूपन डिस्काउंटेड होते हैं बिना पीरियोडिक इंटरेस्ट के। उसके अलावा हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स में डिफॉल्ट रिस्क हाई और रिटर्न हाई होता है। कन्वर्टेबल इक्विटी में चेंज हो सकते हैं, कॉलेबल में इश्यूअर अर्ली रिडीम कर सकता है और पुटेबल में इन्वेस्टर अर्ली सेल कर सकता है। और इंटरनेशनल वाले जैसे पैंडा बॉन्ड्स RMB में चाइना में होते हैं और सैमुराई येन में जापान में होते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी। प्रीलिम्स रेलेवेंस इज कॉलेबल वर्सेस पुटेबल फीचर्स। Conclusion, diversity ensures market liquidity. Questions. Zero coupon bonds interest कैसे पे करते हैं? They don't. They are sold at a discount to face value. Callable और putable में क्या डिफरेंस है? Callable issuer को अर्ली रिडीम करने देता है, पुटेबल इन्वेस्टर को अर्ली सेल करने देता है। हाई यील्ड बॉन्ड्स का दूसरा नाम क्या है? जंक बॉन्ड्स। पैंडा बॉन्ड्स किस करेंसी में डिनोमिनेट होते हैं? चाइनीज रेमिनबी। सैमुराई बॉन्ड्स कहाँ इशू होते हैं? In Japan's domestic market by foreign entities. Now pause and practice saying callable bonds benefit the issuer while putable bonds benefit the investor. In short, bond types cater to varying risk and return profiles. दोस्त, बॉन्ड मार्केट का ये ब्रेकडाउन काफी इंटेंस था ना? अगर ऐसी डीप क्लैरिटी पसंद आ रही है तो जल्दी से इस डीप डाइव को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशंस इनेबल कर लो। You can also use super thanks to support our research. चलो, back to the concepts. Topic name, Masala bonds. Broad micro theme, rupee denominated overseas debt. Clear. Heading, Masala bonds. INR denominated bonds issued to overseas buyers. एग्जाम्पल ये है कि एक इंडियन कंपनी फॉरेन से बोरो करती है पर करेंसी रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर उठाता है। First issued by IFC in 2014. बैकग्राउंड ये है कि इसका नाम मसाला इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए रखा गया। कोर लॉजिक है कि ट्रेडिशनल ECBs में करेंसी रिस्क इशुअर के पास होता है अगर रुपी वीकन हो जाए। मसाला बॉन्ड्स ये रिस्क इन्वेस्टर पे शिफ्ट कर देते हैं। Exactly. इन्वेस्टर्स मार्केट रेट पर INR प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट USD पे करते हैं। RBI 2017 डायरेक्टिव कहता है कि अप टू 50 मिलियन USD के लिए मिन मैच्योरिटी 3 इयर्स है और अबव 50 मिलियन के लिए 5 इयर्स हैं। Real world impact is protecting Indian corporates from rupee depreciation. Prelims relevance is currency risk transfer. Conclusion, strategic tool for overseas capital. Questions देखते हैं। मसाला बॉन्ड्स में करेंसी रिस्क कौन बेयर करता है? The overseas investor, not the Indian issuer. मसाला नाम किसने दिया था? International Finance Corporation. ट्रेडिशनल ECBs का मेन चैलेंज क्या है? Rupee weakening increases repayment costs for the issuer. RBI डायरेक्टिव के मुताबिक 50 मिलियन USD से ऊपर के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी क्या होनी चाहिए? Minimum 5 years.
पहला मसाला बॉन्ड किस साल इशू हुआ था? In 2014 by IFC for infrastructure. Pause and practice saying masala bonds transfer currency risk from the issuer to the investor. In short, masala bonds provide safe rupee-denominated overseas funding. Next. Topic name. External commercial borrowings. Broad micro theme. Foreign debt access. Heading: External commercial borrowings, commercial loans from non-resident lenders to Indian entities. Simple example. एक इंडियन मैन्युफैक्चरर फॉरेन बैंक से लोन लेता है फॉर एक्सपेंशन. Intro है कि it's a key channel for foreign capital. Background है accessing lower interest rates globally. Core logic is they are loans in the form of bank loans, buyer's credit, supplier's credit, securitized instruments. Requires minimum average maturity of 3 years. Right? और ये पॉलिसी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी FCCBs पर भी एप्लीकेबल है. फीमा प्रोविजंस एडहियर करना मैंडेटरी है. Real world impact is driving industrial expansion, prelims relevance is minimum maturity period, and FCCB inclusion. Conclusion. Crucial for large scale corporate funding. Cross questions, let's go. ECBs का minimum average maturity period क्या है? 3 years. FCCBs क्या होते हैं? Foreign currency convertible bonds issued by an Indian company in foreign currency. क्या ECBs को किसी एक्ट के प्रोविजंस अडहियर करने पड़ते हैं? Yes, FEMA provisions. लेंडर्स जनरली कौन होते हैं? Non-resident lenders. किस टाइप के सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड है? Floating rate notes, fixed rate bonds, and preference shares. Perfect. Now pause and practice saying ECBs require a minimum average maturity of 3 years. In short, ECBs are vital for bringing foreign commercial capital into India. Topic name, FEMA, broad micro theme, foreign exchange regulation. Heading: Foreign Exchange Management Act. Law managing external trade and foreign exchange markets in India. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो टूरिज्म के लिए बाहर जाना अब एक मैटर ऑफ राइट है थैंक्स टू फीमा. बिल्कुल. Intro है enacted in 1999. Background is it replaced FIRA of 1973 post liberalization. कोर लॉजिक समझते हैं. फेरा फॉरेक्स शॉर्टेज के टाइम का था, स्ट्रिक्टली कंजर्विंग इट. फीमा ने वायोलेशंस को क्रिमिनल से सिविल ऑफेंसेस बना दिया. हाँ, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जैसे टूरिज्म, एजुकेशन एक मैटर ऑफ राइट बन गए. कैपिटल अकाउंट अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है. ईडी डायरेक्टर्स इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करते हैं. Real world impact is it's boosted external trade. Prelims relevance is the shift from criminal to civil offense. Conclusion, modernized India's forex management. क्वेश्चंस. फीमा ने किस एक्ट को रिप्लेस किया? FERA of 1973. फीमा किस साल में आया था? In 1999. फेरा का मेन फोकस क्या था? कंजर्विंग फॉरेक्स ड्यूरिंग शॉर्टेज. FEMA वायलेशन सिविल ऑफेंस है या क्रिमिनल? दे आर सिविल ऑफेंसेस. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को FEMA ने क्या बनाया? अ मैटर ऑफ राइट. Amazing. Now pause and practice saying FEMA decriminalized foreign exchange violations. In short, FEMA replaced FERA to promote external trade and payments. Next topic name qualified institutional placement. Broad micro theme capital raising. Heading: Qualified Institutional Placement या QIP. Instrument for listed companies to raise capital via institutional buyers. Example, SBI ने 25,000 crore raise किए without retail public IPO. Fast track funding method है ये. Background is avoiding lengthy regulatory paperwork of standard public issues. Core logic is ये listed companies use करती हैं regulated by SEBI to issue equity shares to qualified institutional buyers यानी QIBs. और इन QIBs में आते हैं venture capital funds, pension funds और mutual funds. Real world impact is enhancing corporate liquidity quickly. Prelims relevance is the definition of QIBs. Conclusion, efficient institutional fundraising. Questions, time. QIP कौन यूज करता है? Listed companies regulated by SEBI. SBI ने कितना रेज करने का प्लान किया? Up to 25,000 crore rupees. QIP शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं? Qualified institutional buyers. QIBs के एग्जाम्पल्स क्या हैं? Venture capital funds, pension funds and mutual funds. QIP का मेन फायदा क्या है? Fast capital raising instrument. Right. Now pause and practice saying QIPs allow listed companies to issue equity to institutional buyers. In short, QIP is a swift capital raising tool for listed entities. आगे बढ़ते हैं. Topic name Domestic Art FPI. Broad micro theme Capital Market Shift. Heading है Domestic Retail Investors versus FPI. Indian household savings basically foreign portfolio investments को replace कर रही हैं. Example है कि पहले foreign money market drive करता था, अब retail SIPs करते हैं. Intro है A structural shift in India's capital markets. Background है FPI ownership is at a 15-month low. Core logic domestic MFS और retail investors अब equity market का nearly 19% own करते हैं. ये एक stabilizing force बन गया है against volatile global capital. इससे RBI को monetary policy flexibility मिलती है, रूपी को डिफेंड करने का प्रेशर कम होता है. रिस्क बस ये है कि हाई IPO वैल्यूएशंस और एक्टिव फंड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ा सकते हैं. Real world impact is economic self-reliance. Prelims relevance, RBI monetary policy flexibility. Conclusion. Domestic savers are the new market pillars. Let's do questions. इक्विटी मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का शेयर कितना हो गया है? Nearly 19%. FPI ओनरशिप का स्टेटस क्या है?
It has fallen to a 15-month low. इस शिफ्ट से आरबीआई को क्या फायदा है? Greater monetary policy flexibility. आरबीआई के लिए क्या प्रेशर रिड्यूस हुआ है? Pressure to defend the rupee. रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करंट रिस्क्स क्या हैं? High IPO valuations and fund performance problems. Super. Now pause and practice saying domestic savings give the RBI greater monetary policy flexibility. In short, Indian retail investors are stabilizing the equity markets. Topic name: Gold ETFs. Broad micro theme: safe haven investing. Heading: Gold exchange traded funds. Electronic holding of gold as an underlying asset. Real life example: Physical gold की चोरी का डर नहीं और liquidity बिल्कुल स्टॉक जैसी. Geopolitical uncertainties की वजह से इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ पुश हो रहे हैं. Physical gold storage का ऑल्टरनेटिव है ये. निफ्टी प्योरिटी इश्यूज का जीरो रिस्क, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और ग्लोबल प्राइस अलाइनमेंट मिलती है. नया टैक्स रूल भी आया है. Long term capital gains यानी LTG on gold ETFs held for over 12 months is 12.5%. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बिल्कुल. formalizes gold investment. Prelims relevance is LTG tax rate and holding period. Conclusion: smart way to invest. Questions. Gold ETF का underlying asset क्या होता है? Physical gold Investors इसको क्यों prefer करते हैं? for better liquidity, transparency and safety. क्या इसमें purity का issue होता है? No, purity issues and theft risks are eliminated. LTG apply होने के लिए holding period क्या है? Over 12 months. नया LTG tax rate क्या है? 12.5%. Great. Now, pause and practice saying gold ETFs eliminate theft risk and purity issues. In short, gold ETFs offer a secure, liquid way to trade gold electronically. Next, topic, name, SEBI intraday regulations. Broad micro theme, derivatives market monitoring. Heading: SEBI intraday regulations. New framework monitoring large daily trading positions in index options. मतलब एक ट्रेडर अब अनलिमिटेड इंट्राडे पोजीशंस नहीं ले सकता, स्ट्रिक्ट लिमिट्स अप्लाई होंगे. October 1 से effective है ये. Background is needed to prevent outsized intraday positions on expiry days. Core logic is net intraday position capped at 5,000 crore rupees per entity in index options. Earlier end of day was 1,500 crore. Gross intraday restricted at 10,000 crore. और ये restriction long और short positions पे separately apply होती है. Only restricted to index options. Real world impact is ensuring orderly trading. Prelims relevance, specific caps or applicability. Conclusion: curbs excessive speculative risks. Questions: net intraday position cap कितना set किया गया है? 5,000 crore rupees per entity. Questions. क्या long और short positions mixed हैं? No, restriction applies separately to long and short positions. Main objective क्या है? Prevent outsized positions on expiry day for orderly trading. Okay, now pause and practice saying the restriction applies separately to long and short positions. In short, SEBI restricts huge intraday index options trading to stabilize markets. Moving on. Topic name: US Treasury Securities. Broad micro theme: Forex reserve diversification. Heading: US Treasury Securities, sovereign debt instruments issued by the US government. Example ये है कि India reducing T-bills exposure or buying gold locally to dodge geopolitical risks. US largest destination है India's reserve investments का. US का 50% tariff threat on Indian imports caused a cautious shift. कोर लॉजिक ये है कि इंडिया 10th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है. यूएस एसेट्स फ्रीज कर सकता है जैसे रशिया के किए थे. तो आरबीआई ने अप्रोच शिफ्ट की, गोल्ड हेल्ड अब्रॉड फेल, गोल्ड डोमेस्टिकली रोज. हाँ, और RBI डाइवर्सिफाई कर रहा है across sovereign debt like Japan, Germany, UK, multilateral bonds like World Bank, IMF, BIS deposits और gold. By the way, Japan is the largest investor in US treasuries. Real world impact is geopolitical risk mitigation. Prelims relevance is RBI reserve composition and largest US investors. Conclusion: strategic diversification. Questions: India US Treasury bills का कौन सा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है? 10th largest. US Treasuries का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन सी कंट्री है? Japan. रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने क्या एक्शन लिया था? Blocked Russia's access to treasury securities. आरबीआई ने गोल्ड स्ट्रैटेजी में क्या चेंज किया? Gold held abroad fell, domestic gold rose sharply. आरबीआई रिजर्व्स कहाँ डाइवर्सिफाई करता है? Multilateral bonds, BIS deposits and physical gold. Exactly. Now pause and practice saying RBI balances liquidity by diversifying forex reserves. In short, India is tactically shifting forex reserves away from US over-reliance. Topic name: Securities Transaction Tax. Broad micro theme: direct taxation. Heading: Securities Transaction Tax. A direct tax levied on securities transactions. Real life scenario. Trader profit बनाए या loss, transaction पे tax तो देना पड़ेगा. Supreme Court इसकी constitutional validity examine कर रहा है. 2004 Finance Act में introduce हुआ था to combat tax evasion. Core logic is traders capital gains भी pay करते हैं and STT on transactions, तो double taxation issue है. और TDS की तरह इसमें कोई refund या adjustment provision नहीं है. It's levied just for carrying out the profession. Real world impact is high trading costs. Prelims relevance is STT versus TDS mechanism. Conclusion: a controversial tax mechanism. Questions: STT कब introduce हुआ था? In the Finance Act 2004.
ट्रेडर्स का मेन ग्रीवेंस क्या है? Double taxation with capital gains tax. क्या एसटीटी प्रॉफिट पे डिपेंड करता है? No, it is levied regardless of profit or loss. एसटीटी का इनिशियल पर्पस क्या था? To combat tax evasion in the stock market. एसटीटी और टीडीएस में मेन डिफरेंस क्या है? TDS can be refunded or adjusted, STT cannot. Got it. Now, pause and practice saying STT is levied on transactions regardless of profit or loss. In short, STT is under legal scrutiny for causing double taxation without refunds. Topic name, Small Savings Scheme, Broad Micro Theme, Interest Rate Alignment. Heading: Small Savings Scheme, Government-backed Post Office Savings Options. Real life example, Fixed Safe Return जो GSEC rate से लिंक होते हैं. Interest rates इनके quarterly set होते हैं. Retail safe savings के लिए vital है. Core logic है. Current quarter rates remain unchanged. Basis for fixing rates is aligning them with government securities, यानी GSEC rates of similar maturity plus a spread या markup. Real-world impact is steady income for retail savers. Prelims relevance is linkage to GSEC rates. Conclusion: predictable and secure investments. Let's do the questions. Small savings schemes के rates कितनी बार set होते हैं? Quarterly. इनका दूसरा common नाम क्या है? Post Office Savings Schemes. Rates किस base पे fix होते हैं? Aligned with GSEC rates of similar maturity. Spread का मतलब यहाँ क्या है? A markup over the GSEC rates. Current quarter के rates का status क्या है? They remain unchanged? Great. Now pause and practice saying small savings rates are aligned with similar maturity GSEC rates. In short, small saving schemes offer secure, GSEC-linked quarterly rates. Topic name, Mutual Funds Regulations. Broad micro theme, investor-friendly reforms. Heading: Mutual Funds Regulations. SEBI proposals to simplify voluminous MF rules and reduce costs. Example, ETFs trade like regular stock, giving daily liquidity at lower fees. Comprehensive review by SEBI चल रहा है क्योंकि MF regulations बहुत complex हो गए थे. Core logic, SEBI ने additional expense of 0.05% charged by AMCs over exit load remove कर दिया है. Brokerage slashed to 0.02% for cash or 0.01% for derivatives. ETFs track indices, exchange पे NAV-based trade होते हैं, higher liquidity और tax efficiency offer करते हैं. Real world impact is cheaper investing for retail. Prelims relevance, ETF mechanisms, and SEBI fee cuts. Conclusion, direct benefit to retail investors. Questions, SEBI ने कौन सा additional expense हटा दिया? 0.05% charged by AMCs over exit load. Cash market में brokerage charges कितने slash हुए? Slash to 0.02%. ETF का trading value किस base पे होता है? Based on the net asset value. ETFs और regular MFs में main difference क्या है? ETFs trade like common stock throughout the day. कितने types के ETFs exist करते हैं? 5 types, including equity, bonds, and commodity. Perfect. Now pause and practice saying ETFs offer higher daily liquidity and lower fees than mutual funds. In short, SEBI's new MF regulations cut costs and promote ETF efficiency. Topic name, Official Action Indicated, Broad Micro Theme, FDA Compliance. Heading: Official Actual Indicated, या OAI. A US FDA classification recommending regulatory action post-inspection. Example ये है कि Sun Pharma stock fell 2.77% just because उनकी facility को OAI tag मिल गया. Facility Inspection Grading System है ये, crucial for pharma exports to the US. Core logic में 3 classifications है. OAI मतलब Regulatory Action Recommended. Voluntary Action Indicated मतलब Objectionable Conditions Found but agency not taking action. और No Action Indicated मतलब No Objectionable Conditions. Real World Impact directly impacts stock prices and export capabilities. Prelims relevance. Meaning of the 3 FDA indicators. Conclusion: Compliance is a major stock driver. Questions: OAI classification कौन issue करता है? The US FDA, OAI status का मतलब क्या है? regulatory and administrative actions are recommended. Voluntary action indicated में FDA क्या करता है? Objectionable conditions found but no agency action. किस इंडियन कंपनी के फैसिलिटी को OAI टैग मिला था? Sun Pharmaceutical Industries in Bhavka, Gujarat. No action indicated का मतलब क्या है? No objectionable conditions were found. Wow. Now pause and practice saying OAI implies regulatory actions are recommended by the FDA. In short, OAI is a severe FDA warning that triggers regulatory actions. Topic name, Financial Conditions Index. Broad micro theme, Economic Health Monitoring. Heading: Financial Conditions Index. An RBI proposed real-time daily indicator of financial market health. Example के तौर पर एक थर्मोमीटर जो बताता है इकोनॉमी टाइट है या इजी. Intro है कि ये RBI study proposal है. Need for a high-frequency gauge relative to historical average since 2012. Core logic is its composite indicator. ये conditions capture करता है across money market, GSEC, corporate bonds, equities and forex market. इसका real-world impact है better monetary policy decisions. Prelims relevance is the components of the FCI.
Conclusion: a unified dashboard for India's financial health. Let's do the questions. FCI का कंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंसी क्या प्रपोज किया गया है? डेली फ्रीक्वेंसी। ये इंडेक्स कौन प्रपोज कर रहा है? अ रीसेंट आरबीआई स्टडी। FCI किन मार्केट्स को कैप्चर करेगा? मनी मार्केट, जीसैक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड फॉरेक्स। इंडेक्स हिस्टोरिकल एवरेज किस साल से मेजर करेगा? सिंस 2012। FCI का मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताना है? How tight or easy financial market conditions are. Nice. Now pause and practice saying FCI captures conditions across money, bonds, equity and forex markets. In short, FCI will serve as RBI's real-time financial health dashboard. Topic name: Insolvency and Bankruptcy Code. Broad micro theme: Corporate Dispute Resolution. Heading: Insolvency and Bankruptcy Code. Time-bound framework to resolve corporate insolvency. Real life example: एक bankrupt company को 330 दिन के अंदर resolve करना पड़ेगा. Introduced in 2016. Background है कि NCLT faces dual burden of IBC and Companies Act cases. Core logic है creditor in control framework. Max resolution period 330 days. FY 23-24 में 48% of total bank recoveries यहीं से आईं. NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इराडी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बना. अपील्स NCLAT और फिर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं. Real world impact is faster recovery of bad loans. Prelims relevance is resolution timeline and Iradi committee. Conclusion: revamped India's credit recovery culture. क्वेश्चंस. IBC का मैक्सिमम रेजोल्यूशन पीरियड क्या है? 330 days. FY 23-24 में बैंक रिकवरीज का कितना परसेंट IBC से आया? 48%. NCLT किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना? जस्टिस इराडी कमेटी. NCLT किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. NCLAT डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहाँ होती है? टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. Great. Now pause and practice saying NCLT is the primary adjudicating authority for insolvency cases. In short, IBC provides a 330-day time-bound creditor controlled resolution framework. Topic name: Energy and Efficiency. Broad micro theme: Power demand management. Heading: Energy and efficiency. Using less power for the same output to tackle rising demand. एग्जाम्पल है कि उजाला स्कीम के LED बल्ब्स ने CFLs का आधा पावर यूज करके पीक डिमांड घटा दी. इंडिया पीक पावर डेफिसिट 0.69% से 5% हो गया है. हम थर्ड लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर हैं और 70% एनर्जी कोल से आती है. कोर लॉजिक एनहांसिंग एफिशिएंसी इज क्विकेस्ट. उजाला और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम ने पीक डिमांड रिड्यूस की. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 इसको ड्राइव करता है. IEA की नोट्स कहता है कि एफिशिएंसी ने ग्लोबली 15% एनर्जी डिमांड अवॉइड की. पर कूलिंग नीड्स की वजह से इंडिया प्लान्स 90 GB मोर कोल बाय 2032. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज मिटिगेटिंग पावर कट्स. Prelims relevance: Ujala, impact or energy mix. Conclusion: efficiency is the hidden fuel. Let's do the questions. India का peak power demand कितना हो गया है? 250 gigawatt. उजाला स्कीम का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? Reduced cost of LED bulbs and peak demand. LED बल्ब्स कितना पावर कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू इनकैंडेसेंट? 1/9 the power. इंडिया में पावर कंजम्पशन की ग्लोबल रैंकिंग क्या है? Third largest after China and the US. अभी भी इंडिया का कितना एनर्जी कोल से आता है? 70%. वाओ. Now, pause and practice saying. Enhancing energy efficiency is the quickest way to tackle power demand. In short, energy efficiency via schemes like Ujala bridges the power deficit gap. Topic name: Clean energy share. Broad macro theme: Renewable integration. Heading: Clean energy share. The actual contribution of non-fossil fuels in India's power matrix. Example देखें तो ओडिशा generating 34% of its power from clean sources. Total installed capacity 484.82 gigawatt है. Non-fossil sources installed capacity का 50.1% है. Core logic: Despite 50% capacity, clean energy generates less than 30% of actual supplied electricity due to lower capacity utilization factor. WEF's Energy Transition Index 2024 में हम 63rd हैं. Sweden tops. India added 46 gigawatt solar, becoming the third largest global contributor. Real world impact has climate goals, progress. Prelims relevances: ETI ranking or non-fossil capacity percentage. Conclusion: capacity high है but generation needs a boost. Questions: total installed capacity में non-fossil fuel का share क्या है? 50.1%. Actual electricity generated में clean energy का share कितना है? Less than 30%. WETI 2024 में इंडिया का रैंक क्या है? 63rd out of 120. ETI 2024 में टॉप कंट्री कौन सी है? Sweden. कौन सी स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी हब इमर्ज हो रही है? Odisha. Superb. Now pause and practice saying non-fossil capacity is 50% but actual generation is below 30%. In short, India leads in solar additions but faces a gap in capacity utilization. Topic name: Grid emission factor. Broad micro theme: Carbon intensity. Heading: Grid emission factor. Measuring the carbon intensity of electricity generation. Real life example: even with more solar panels, रात को कोल प्लांट यूज करने से emission बढ़ जाता है. Intro है GEF increased to 0.727 TCO2 per MWH.
Grid more carbon intensive हो रही है. Core logic is solar or wind operate at 15-25% CUF, जबकि coal 65-90%. Renewables ने सिर्फ 22% electricity supply की. CEA projects GEF will fall to 0.430 by 2031-32. Real world impact is emission tracking, prelims relevance, CUS differences and GEF trend. Conclusion, base load is still highly dependent on coal. Questions, grid emission factor क्या measure करता है? Carbon intensity of electricity. GEF का recent trend क्या रहा है? It increased to 0.727 TCO2 per MWH. Solar and wind plants का capacity utilization factor कितना होता है? 15 to 25%. Coal and nuclear plants का utilization factor क्या है? 65 to 90%. 2005-2019 के बीच इंडिया ने emissions intensity कितनी reduce की? By 33%. Great. Now pause and practicing. Grid emission factor measures the carbon intensity of the electricity grid. In short, low renewable CUF makes our grid heavily carbon reliant. Topic name, oil and gas sector. Broad micro-theme hydrocarbon infrastructure. Heading, oil and gas sector. Expanding domestic exploration and digital logistics. Example है, कोयला शक्ति पोर्टल से ट्रेन ट्रैक्स पे कोल मूवमेंट ट्रैक होता है लाइव. हम थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर और फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर है. डिमांड 2.5 टाइम्स ग्रो करेगी by 2047. Core logic, no-go areas 99% reduce हो गए. Gas pricing pegged to 10% of Indian crude basket. Ethanol blending 19.7% पर. सातात स्कीम ने 100+ CBG प्लान्स ऑपरेशनलाइज किए. ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट एक्ट 2024 हाइब्रिड लीजेस एनेबल करता है. Clamp portal land acquisition के लिए है. Real world impact is reducing import dependency. Prelims relevance is कोयला शक्ति, Clamp, Satat. Conclusion, massive push for domestic hydrocarbon efficiency. Questions, India का oil consumption में global rank क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर. Satat scheme किस चीज से related है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स. नया gas pricing mechanism किस benchmark पे based है? Pegged to 10% of the Indian crude basket. कोयला शक्ति डैशबोर्ड का पर्पस क्या है? Real-time monitoring of coal movement. क्लैंप पोर्टल किस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है? Land acquisition and compensation in the coal sector. Awesome. Now pause and practice saying clamp portal streamlines land acquisition in the coal sector. In short, India is scaling domestic oil, gas, and coal infrastructure aggressively. Topic name, India's oil import basket. Broad micro theme, geoeconomic sourcing. Heading India's oil import basket, where India gets its massive crude oil supply from. Example देखो. पहले सऊदी पे डिपेंड थे, अब रशिया is the biggest supplier. High dependency drains $170 billion forex, 85% oil और 50% gas import होता है. Core logic. Pre-2015, 70% Middle East से था. 2020 में ईरान 0 हो गया. 2024-25 में Russia surged to 35.8%. West Asia dependency reduced to under 45%. Real world impact is macroeconomic stability. Prelims relevance is share of Russia versus West Asia. Conclusion, strategic geopolitical sourcing. Questions, India crude oil का कितना % import करता है? Over 85% of its needs. ईरान का शेयर 2020 में कितना हो गया? Dropped to 0. 2024-25 में रशिया का शेयर कितना हो गया? It stood at 35.8%. वेस्ट एशिया से ऑयल डिपेंडेंसी अब कितनी बची है? Under 45%. इंपोर्ट बिल फॉरेक्स रिजर्व्स पे क्या इफेक्ट डालता है? Increases trade deficit and puts pressure on the rupee. Spot on. Now pause and practice saying India has successfully reduced dependency on West Asia for crude oil. In short, Russia has dramatically replaced traditional Middle East suppliers in our basket. Topic name, Global Oil Dynamics. Broad micro theme, price fluctuations. Heading, Global Oil Dynamics, how world events impact the price of crude oil. जब global growth slow होती है, oil सस्ता होता है, saving India billions. Crude most valued commodity है. IMF WEO predicts dim global growth at 3.2%. Core logic, supply up है due to shale and deep drilling. Demand weak है, prices fall होंगी. और इंडिया के लिए every $1 decline in oil price improves the current account deficit by $1.6 billion. ये इन्फ्लेशन लोअर करता है, सब्सिडी बर्डन घटाता है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज डायरेक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल. प्रीलिम्स रेलेवेंस, CAD इम्पैक्ट पर डॉलर ड्रॉप. कंक्लूजन, इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम फॉलिंग प्राइसेस. क्वेश्चंस, ग्लोबल डेली ऑयल ट्रेड की वैल्यू क्या है? Exceeds $3 billion. IMF के WEO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है? Slowing to 3.2%. ऑयल प्राइस में $1 ड्रॉप आने से CAD कितना इंप्रूव होता है? by $1.6 billion. लो ऑयल प्राइसेस का फिस्कल बेनिफिट क्या है? Lower subsidy burden and reduced inflation. ऑयल सप्लाई बूस्ट के मेन टेक्निकल रीजंस क्या हैं? Shale horizontal drilling and ultra deep drilling. Perfect. Now pause and practice saying every $1 decline in oil price improves CAD by $1.6 billion. In short, a slowing global economy means cheaper oil and massive savings for India. Last one, topic name, ethanol blending, broad micro theme biofuel alternatives. Heading, ethanol blending.
mixing biofuel derived from biomass into petrol. एग्जाम्पल, E20 पेट्रोल यूज करना मीन्स 20% एथनॉल, जो गाड़ी के रबर पार्ट्स खा सकता है अगर इंजन कंपैटिबल ना हो। Carbon neutral import substitute. Saves $10 billion import costs. Core logic is, it's derived from molasses and damaged grains. Fermentation yields ethanol and CO2, lower calorific value but higher octane number than petrol. E20 target 2025 में hit हुआ, E27 plan for 2030. Hygroscopic nature causes rust and damages older elastomeric parts. Pre-2020 engines struggle करते हैं. Sugarcane aquifers को stress करता है. Real world impact is emission reduction versus engine wear trade-off. Prelims relevances, types of molasses, hydroscopic property, E20 dates. Conclusion, a complex balance. Questions, ethanol production process में कौन से enzymes use होते हैं? Enzymes. इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल के कंपैरिजन में कैसी है? It has a lower calorific value. इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, इसका क्या इफेक्ट होता है? Absorbs water, causing rust and clogged fuel lines. इंडिया ने E20 टारगेट कब अचीव किया? By 2025, 5 years ahead of the 2030 target. E27 ब्लेंडिंग का टारगेट ईयर क्या सेट किया गया है? The target is 2030. Great job. Now pause and practice saying ethanol is hygroscopic and damages older elastomer parts. In short, ethanol blending cuts oil imports but requires engine hardware upgrades. Phew, what a ride. हमने मार्केट रेगुलेशन से लेकर डिजास्टर फाइनेंस और एनर्जी ट्रांजिशन तक सब डिकोड किया। बिल्कुल. SEBI and market builds massive retail safety ensure कर रहे हैं. Bonds like CAT, Tier 1 and 2 और मसाला diverse liquidity provide करते हैं. Indices और रेगुलेटरी पैरामीटर्स जैसे FCI, OAI, IBC स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में यूजाला और क्लीन कैपेसिटी पुश देखा और रशिया हमारे ऑयल बास्केट को डोमिनेट कर रहा है। Finally, ethanol E20 हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रीशेप कर रहा है. तो दोस्त एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट सुनो, सोचो जरा, अगर 50% क्लीन एनर्जी बस 30% पावर दे रही है, क्या हमारा अगला डीप डाइव बैटरी स्टोरेज रेवोल्यूशन पर होना चाहिए? खुद एक्सप्लोर करना दोस्त। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।